हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यू डोंट बिलीव मी? कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आप मुझे पक्का बिलीव करने लग जाएंगे। Okay, so let's start this video with a small question, and my question to all the students out there is कि क्या आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं? क्या आप अपने दिन में जो जो सोचते हैं टास्क उसको कंप्लीट कर पाते हैं? और लेट मी पुट इट इन दिस वे कि क्या आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के टुवर्ड्स वर्क कर पाते हैं एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर शॉर्ट टर्म गोल्स? You know the answer and the answer is no or maybe sometime. तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए है एक सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन है टाइम टेबल। टाइम टेबल, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो यू विल थैंक मी थ्रू आउट योर लाइफ। यू नो व्हाई? फॉर फ्यू रीजंस। नंबर वन रीजन कि इस टाइम टेबल के अंदर नॉट ओनली स्टडीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है बट ऑल्सो स्किल्स डेवलपमेंट में भी दिया गया है। नंबर सेकेंड, ये टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करता है फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब अगर आपके एग्जाम्स को 5 मंथ्स और 6 मंथ्स आने वाले हैं तो इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। Not only this, it has a lot of time to chill and enjoy. Isn't that cool? So what are we waiting for? Let's begin with the video and understand what kind of timetable I have come up with for all of you. This video will be divided into 3 parts. Part number 1 will be about कि कैसे हम अपना टाइम टेबल आइडली बना सकते हैं, मतलब क्या क्या components हैं to make our timetable ideal timetable. Number second part of the video is a timetable for all the students. And part 3 of the video is about the hacks to make the online classes interesting and effective for you. हम लोग का पढ़ाई का मोड डिफरेंट हो गया है। We all are studying through online classes. तो अब एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जो हमारी इन नीड्स को फुल करे, राइट? तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक रूटीन या एक टाइम टेबल बनाते हैं अपने लिए तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। सो टाइम टेबल के अंदर नंबर 1 होने चाहिए स्लॉट ऑफ स्टडीज एज यूजुअल, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड आपके स्लॉट ऑफ स्टडीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकेंड जो एक टाइम टेबल के अंदर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द लेजर टाइम और द टाइम टू चिल। नंबर थर्ड, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर स्लॉट हो फॉर स्लीपिंग ऑल्सो। एटलीस्ट 7 to 8 hours of sleep is very very important for all the students. नंबर फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। एक जो टाइम टेबल होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड नंबर फिफ्थ जो एक टाइम टेबल के अंदर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है योर अलाइनमेंट टू द लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आपका टाइम टेबल आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलाइन नहीं करता है तो वो एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द टाइम टेबल। So, I have an interesting announcement to make, and that is Unacademy has launched Maharashtra SSC Board for Class 9 and for Class 10. And all the subjects are covered in English, Hindi and Marathi. And you have the top educators from across Maharashtra who will be teaching you. The best in class teaching, free test series, revision batches, crash courses, live doubt solving, previous year's question paper. And you know what? Not only this, they have free live classes running on their YouTube channel. And in case you like any live class, what you need to do is just use my referral code to get the subscription at only 280 rupees per month per subject. So avail the offer quickly, and my referral code is LBW1. So all your students out there have to get up at 6:30 AM in the morning. और 6:30 AM पे उठ के you need to freshen up and have a detox drink. What I suggest is either you take warm water, honey and lemon, or you can take ashgard juice, whatever suits you.
Then at 7 o'clock you should get ready for your exercise, right? Because जब हमें स्टडी करनी है तो उससे पहले हमें अपने माइंड को अवेक करना है, हमें अपने माइंड को किक स्टार्ट करना है, एंड उसके लिए देयर इज नथिंग बेटर देन एक्सरसाइज. यू नो व्हाट, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे माइंड के अंदर जितनी भी इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो होती है हिपोकैम्पस के थ्रू. और हिपोकैम्पस की साइज को इंक्रीज करने के लिए या उसके अंदर न्यूरॉन्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ओनली थिंग दैट वर्क्स बेस्ट एंड दैट इज एक्सरसाइज. So make sure that from 7 to 8 AM हम करें exercise. If you're doing high intensity exercise, so do it from 7 to 7:45 and 7:45 to 8 keep that slot for meditation. Now your mind is awake. Now you have to work on your body. तो आप क्या करेंगे? उसके लिए लेंगे आप एक wholesome and hearty breakfast. अगर आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत सारा जंक लेने वाले हैं तो आपका सिस्टम हो जाएगा sluggish. So I would suggest don't have a very heavy breakfast but have a wholesome one. So 8 AM to 9 AM is the time for you to get ready, have your breakfast, and I am assuming that your classes start from 9:30 and goes on till 12:30. पर इन केस आपकी क्लासेस का टाइम ये नहीं है तो लाइक अ जिगसॉ पजल यू हैव टू जस्ट अरेंज डिफरेंट थिंग्स हियर एंड देयर. आपकी क्लासेस आगे हैं या पीछे हैं तो आप किसी भी चीज को आगे पीछे मूव कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. सो 8 to 9 होगा हमारा टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड गेटिंग रेडी फॉर द क्लासेस. And from 9 to 9:30 it is a very important time because इस टाइम में हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं क्लासेस के लिए. क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको you have to make sure that you have these 5 things on your table. Number 1 is your water bottle. Number 2 is all the required material. Number 3 is your charger. If you're doing it on a laptop or a phone, your charger needs to be there. Number 4 is required stationery, and number 5, which is very important, is that you need to keep away your phone और उसकी notifications off करके आपको रखना बहुत important है ताकि आप अपनी classes में बार distracted ना feel करें. Now from 9:30 to 12:30 आप करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस एंड फ्रॉम 12:30 to 1:30 जितना भी आप टेम्प्ट हो रहे होंगे कि क्लासेस खत्म हो गई हैं, अपनी बुक्स को बंद करते हैं और अब इंजॉय करने का टाइम है. बट आई हैव अ स्मॉल टिप फॉर यू ऑल, और वो टिप ये है कि इस टाइम पे आप अपने माइंड को थोड़ा सा फोर्स करके एंड जस्ट सिट डाउन एंड राइट डाउन कि आपने क्लास में क्या क्या किया. नंबर 1. नंबर 2, आप एक पेपर पे ये भी लिखेंगे कि आपको नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या करना है, पूरे दिन के अंदर क्या क्या होमवर्क कंप्लीट करना है. अगर आपने ये टास्क अभी कर लिया so you are sorted for the entire day. So make sure that you don't waste this really important hour after your classes. Now 1:30 is the time for you to have your lunch. 2 to 2:30 either you can read something if you want to or you can just relax. From 2:30 to 3 you can take a nap if you want to because nap आपके माइंड को अलर्ट एंड एक्टिव बना देता है. एंड वंस योर माइंड इज अलर्ट एंड एक्टिव तो आपकी जो भी ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है. नाउ फ्रॉम 3 to 4 PM होगा हमारा पहला स्टडी सेशन. 4 to 5 PM होगा आवर टाइम टू कंप्लीट आवर होमवर्क. From 5 to 6 will be our time for our next study session. At 6 o'clock we have completed 3 hours of study session. Now this is the time for you to chill, relax, have a break, go out in the nature, meet your friends, connect with your friends, have a snack. Now 7 to 8 PM ये वो टाइम है जब आप वर्क करेंगे अपनी स्किल्स को डेवलप करने में. If you are interested in music, you can go for that. If you're interested in any sports, play that. If you are interested in doing calligraphy or anything that you like to do, please go ahead and do that in this time frame. Now 8 to 9 is your time to have your dinner and to complete some household chores if any. 9 to 10 is your time in case you want to spend some time on social media and also अगर आपको कोई भी pending आपके work है आपको complete करने हैं that you can do in this time frame or you want to spend time with your family,
you can do that in this time frame. And now 10 to 11, that is the golden hour. You know why? Because इस टाइम पे अगर आप कुछ भी पढ़कर और सोएंगे तो आपका माइंड उसे इतने अच्छे से प्रोसेस करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. सो मेक श्योर कि सोने से पहले आप एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट को लें और उसे हाफ एन आवर के लिए पढ़ें और दिन भर में जो आपने किया है उसे रिवाइज करें. And the third thing that you have to do in this time period is write your log or your things to do list for the next day. अगर आपने ये कर लिया, so you are sorted for the next day also. Make sure that you do this. And at 11 o'clock is your time to go off to sleep with 7.5 hours of sleep time. ऑनलाइन क्लासेस मतलब यू गेट बोर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप वर्चुअली अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं एंड लॉन्ग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं एक ही जगह पर बैठ के. But life is never about having the best cards. It's about learning how to play well with the cards available. So let me give you some really interesting hacks जिससे कि आप अपने ऑनलाइन स्टडीज को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. So let's begin. Number 1 hack is actively engage yourself in the class. अगर आप क्लास में बस बैठे रहेंगे सुनने के लिए कि हाफ एन आवर इज लेफ्ट और उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, बिलीव यू मी वो हाफ एन आवर भी आपके लिए खत्म करना बहुत मुश्किल होने वाला है. बट इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द क्लास, इफ यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर, इफ यू कीप इंटरैक्टिंग, you will make the class really productive for yourself and also for others. Now, number 2, जब भी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं. तभी हमें अपने फ्रेंड को कॉल करना होता है, तभी हमें नोटिफिकेशंस चेक करनी होती है और तभी हमें बहुत सारे काम याद आ जाते हैं. So this hack number 2 is very effective and this is to make a distraction sheet. मतलब एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और जो भी काम आपके माइंड में आ रहा हो इस टाइम पे just keep jotting it down. मतलब आपके माइंड में आ रहा है कल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपको विश करना है, just write it down because right now you attending your class और आपको पूरा अटेंशन देना है अपनी क्लास में. So ये डिस्ट्रैक्शन शीट आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल. Now let's move to hack number 3 and that is maintain notes not digitally. मतलब as tempting as it may be कि हम अपने notes बनाएं digitally, word document पे screenshots लेकर और PPTs पे और कहीं पर भी digitally. But please don't do this. You know why? Because जब हम ऐसे notes बनाते हैं digitally तब हमारे mind के अंदर grasping नहीं होती उतनी अच्छी as compared to when we make the notes with our hand and with our hand using pen or paper. So when we write it with the paper and pen, उस information को और भी अच्छी तरह से process कर पाते हैं. So make sure that you write notes while your online classes are going on. Next hack is in between your online classes, don't forget to stretch. Don't forget to stretch your hands, don't forget to stretch your neck, don't forget to stretch your body because ये आपके posture को बनाने वाली है better. And let's move on to the next hack and that is to keep the laptop you starting from at the eye level. Right? For example, when you are studying, your laptop should be at this level rather than at this level or here. Okay, this will make sure कि आपका posture perfect हो और आप ठीक से लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएं. And also don't forget to keep your water bottle handy because जब आप पढ़ाई करते हैं और उसके बीच में अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते हैं तो हो जाती है माइंड फॉगिंग जिससे आपकी ग्रास्पिंग पावर हो जाती है लो. So if you don't want this and you want your productivity to be high, so this needs to be there whenever you are attending your online classes. So that's about it and we come to an end of our video.
आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा. Also, if you want a video on weekend, leave that in the comment section below. So I'll see you very, very soon. Take care and have a very, very productive study sessions. Bye bye. So, I have an interesting announcement to make, and that is Unacademy has launched Maharashtra SSC Board for Class 9 and for Class 10. And all the subjects are covered in English, Hindi, and Marathi. And you have the top educators from across Maharashtra who will be teaching you. The best in class teaching, free test series, revision batches, crash courses, live doubt solving, previous year's question paper. And you know what? Not only this, they have free live classes running on their YouTube channel. And in case you like any live class, what you need to do is just use my referral code to get the subscription at only 280 rupees per month per subject. So avail the offer quickly, and my referral code is LBW1.